வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோஹரா. Who is this Lord Muruga? Muruga, Kartikeya, Skanda, Shanmuga, Vela, Vadivela. A lot of names implying the same Lord Muruga. Muruga is a tutelary deity mentioned in Tamil Sangam literature of the Kurunji region. He was formed from the powerful flame of fire that originated from the third eye of Lord Shiva, the eternal reality. The son of Lord Shiva and Parvati, Muruga is the second son next to Lord Ganesha. Muruga is worshipped widely in South India, especially in Tamil Nadu and also in other countries like Malaysia, Indonesia and Singapore. According to Skanda Purana, Lord Murugan was born out of pure divine energy. His creation was not ordinary, it was a mission by the gods to destroy the evil devil Surapadman. There are 6 popular temples or abodes, we call it as Arupadai Veedu, and they are Thiruparangundram, Tiruchendur, Pazhani, Swamimalai, Tiruthani and Pazhamudir Cholai. The poet Nakkirar of Sangam age has sung many songs in the praise of Lord Muruga, well known as Tirumurugatrupadai, describing the 6 abodes of Lord Muruga. These 6 abodes, Arupadai Veedu, refers to the different forms of Murugan pertaining to the 6 different events that took place in his life. Lord Muruga married Indran's daughter Deivane at Thiruparangundram, the first Padai Veedu. The second Padai Veedu, Tiruchendur, commemorates the event Surasamharam in a grand manner where Lord Muruga destroys the demon Surapadman. The legend is that the Lord Murugan was worshipped by goddess Lakshmi, Thiru, sacred cow Kamadhenu, A, sun god Suryan, Inan, earth goddess Ku in Tamil and fire god Agni, D, is called as Thiruvaavinankudi, Pazhani, the third shelter. And the fourth Padai Veedu is one of my favorites, which is near my place, Kumbakonam. Swamimalai Swaminathan Swami. The temple commemorates the incident where Murugan explained the essence of the Pranava Mantram Om to his father, none other than Lord Shiva. There are 60 steps to reach the hill temple and is represented by the 60 Tamil years. This is the fourth shelter. The fifth abode, Tiruthanigai, which is now popularly called as Tiruthani, is a place having 365 steps representing the days of the year, and Lord Murugan met Valli near this place and got married at this place. Tiruthani, fifth shelter. And the sixth shelter is Pazhamudir Cholai, located on Solaimalai Hill near Madurai, the holy stream nearby called as Nupura Gangai. Houses the devotees with his consorts Valli and Deivane. This is also the historical place where Lord played with the great Tamil poetess Avvaiyar, asking her whether she wanted the fresh fruit or cooked fruit or uncooked fruit. Sutta Pazham Venduma, Sudada Pazham Venduma. Episode conducted here. Blessed to share here a few clips from the Malai Mandir Uttara Swamimalai at New Delhi. The Balalayam pictures and clips taken on 7th March 2026. Do watch all the videos after subscribing once to this free channel. Thank you. पंचमावरणे खड्गाय नमः मुसलाय नमः कुठाराय नमः दण्डाय नमः अंकुशाय नमः पाशाय नमः वेतालाय नमः कुन्दालिने नमः शूलाय नमः नाराजाय नमः समस्त देवतानां அங்க கீழே அப்படி பத்துச்சு இல்ல அந்த ஸ்டாண்ட கொண்டாங்க
அதான் கொண்டு வந்துக்கிறேன். எங்கே வைக்கணும்? ரெக்கார்டு ஆயின்னு இருக்கு இல்லையா? ஆயின்னு இருக்கு இல்லையா? ரெக்கார்டு எங்கே ஆறுதுன்னு ஆறுது நம்பர் வருது. என்ன பண்ணுறாரு? प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं दत्तासि त्वमेव केवलं दत्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं प्रथममस्मि सत्यमस्मि अवक्तुं माम् अवतारम् अवश्वतारम् अवतारम् अवतारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवप्रसादे अवदक्षिणातादे अवपश्चातादे अवभूषणातादे अवोदातादे अवरातादे सर्वलोकाहि पाहि समन्तादे साड़ी लेके आगे आनंदमय स्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वो सृष्टते सर्वं जगदिदं प्रलयमेष्टते सर्वं जगदिदं दैवप्रतिष्ठते त्वं भूमिरापो नलो नभः त्वं चत्वारिकारिकावदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं लक्षत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारेषु नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुः त्वं रुद्रः त्वं इन्द्रः सूर्यचन्द्रमाः भूर्भुवस्वरं गणादेव मूर्धमुच्चार्य वर्णादेव नरन्दरं विश्वारकरधरः अधेन्द्रसुतं दशारेण रुद्धं एतत्तोमस्वरूपम् अकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चाहन्तरूपम् इन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सविनिरासन्देः श्रीगणेश विद्या गणगर्षिः अजर्गायत्री छन्दः महागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः मनोदन्तिप्रतिप्रजाः शायदन्तं चतुरस्तं पाशं गजधार्यं भगं जगदमस्ते विभ्राणं जगद्भगं रक्तं लम्बोदरं शुल्पकर्णं रक्तवाससं रक्तबन्धानित्यं स्पूजितं रक्तानुगम्ये देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतन्ददृष्ट्यालोकते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो प्रातपदये नमो गणपतये नमो प्रपदये नमो श्रीगणेशाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः विश्वोत्पत्तिविभक्तिसंसुराग्नेयसेष्टार्थतः लां ग्लूं तत्त्वा गणपति विद्यादेहाय नमः ॐ नेत्रेभ्यो नमः गणानाहं त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनां वत्सवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् स्वामेवेनोक्तं भाव्य गन्ध पुष्प अक्षदैः समर्प्य स्वामी பஞ்சமாவட்டினது இப்போ பிரதமாகணும் முதல்ல அஸ்திரம் அஸ்திரம் என்ன சொல்லு अस्त्राय नमः नेत्रेभ्यो स्वाहा हृदयाय नमः प्रचोदयाजमूर्तये नमः वामदेव्याय नमः ओम अघोरहृदयाय नमः देव तत्पुरुषोत्तराय नमः ओम ईशानमूर्ताय नमः द्वितीयावरणे ओम लंबोदराय नमः विनायकाय नमः ओम गं गजकर्णकाय नमः ओम गं पक्षप्रियाय नमः ओम गं गजाननाय नमः ओम गं विघ्नेशाय नमः वीराय नमः वरदाय नमः तृतीयावरणे ओम गं நீங்கள் பிடிச்சிருவோம் कुंभचंडाय नमः रुद्राय नमः அது ரைட்டு என்ன இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணி எனக்கு எடுக்க தெரியல முதல்ல வீடியோ ஆன் பண்ணீங்களா Thank you.
सह शरणागति एक फ्री धार्मिक यूट्यूब चैनल है जिसमें 1000 से भी ऊपर मंदिर रिलेटेड वीडियोस है। हमारा धार्मिक स्क्रिप्चर्स और सनातन धर्म के बारे में वीडियोस डाले हैं। 1700 के ऊपर वीडियोस है। एक बार फ्री सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके सब वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव और प्लेलिस्ट पूरा देखें। अगर आपको यूज़फुल लगा तो आपका फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर करके देखिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। प्रेयर्स फॉर ऑल, everyone for all and all for everyone. Join us and stay together, stay connected. Radhe Krishna.